Welcome back, guys. हम करेंगे waves question 1 paper 2 5054. Let's start question 1. Figure 8.1 shows a ripple tank and the crest of the water wave that is produced in it. तो हमें ripple tank दिया हुआ है and the water waves are being produced in that. ठीक है ना? The frequency of the water wave is 2 hertz and the amplitude is 3 millimeters. Calculate the number of crests produced in 1.5 seconds. अच्छा उसने पूछा कि the number of crests produced in 1.5 seconds. By crest he means from here to here, which will also be considered one wavelength. Because wavelength क्या होती है? Two identical points from adjacent waves. अगर ये वाली एक वेव है और एक ये वाली वेव है और दो सिमिलर आइडेंटिकल पॉइंट्स हम ले, अगर हम फॉर एग्जांपल ये और ये वाला पॉइंट भी ले लें, दैट विल स्टिल बी वन वेवलेंथ. ठीक है ना? So we have to take two identical points from adjacent waves. अगर हम crest से crest ले लें, that will be a wavelength. अगर हम इस point से इस point तक ले लें, that will still be wavelength. अगर हम इसको copy करके देखें और हम इसको exactly on the other side of the wave निकालें, तो हम इधर बनाएंगे और these 2 points will be equal to the wavelength. So, by the number of crests produced in 1.5 seconds, he means the number of wavelengths produced in 1.5 seconds. So, that is what he is asking. So, let's see. So, number of crests will be given by frequency into time. Frequency into time लिख लेते हैं पहले वरना then we'll put the values. Frequency will be 2 and time will be 1.5, which will give us 3. 3 will be the number of waves produced. अच्छा आगे चलते हैं. The height of the water is measured from the level of the undisturbed surface of the water. So if this is going to be the undisturbed surface of the water, which will be in the middle, in the center, ठीक है ना, in the middle of the ups and downs. For example, अगर आप देख रहे हो एक फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ऑफ वाटर है, पहले the body of water is straight, but when it has been given an external force, ये होती है vibrate and it produces crests and troughs. This is the crest and this is the troughs. लेकिन the undisturbed surface of the water will still remain in the center of them, in the center of the crest and the trough. आगे देख लेते हैं. The height of the wave at one point is 0 at time is equals to 0. So the height of the wave is 0 at t is equals to 0. So he is talking about here. ठीक है ना? तो आगे देखते हैं. On figure 8.2, draw a graph to show how the height of the wave at this point varies with time. अच्छा, first of all, we have to see कि height हमें दी हुई है on the y-axis और हमें time दिया हुआ है on the x-axis. So we need to find out two values, which is going to be the height aka the amplitude. So height is equals to the amplitude or time will be equals to the time period it takes, the amount of time it takes in order to pass one wavelength. So we need the time period and the amplitude. We have the amplitude, which is the 3. 3 will be the amplitude. We just need the height. We just need the time. So time निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. frequency is equals to 1 by time. और अगर हम टाइम और फ्रीक्वेंसी की जगह से रिप्लेस कर दें तो विल गेट टाइम इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी. टाइम हमारे पास निकालने वाला है 1 हमारे पास एज इट इज, फ्रीक्वेंसी विल बी 2. तो टाइम विल बी इक्वल्स टू 1 by 2. So what does this indicate?
This indicates the amount of time it takes for one wavelength to pass will be 0.5 seconds. तो एक वेवलेंथ एक तो यहाँ पास होगी, फिर एक अगली वाली यहाँ पास होगी और आखिरी वाली यहाँ होगी. So we have to make three waves, three complete waves. ठीक है ना? तो now we have to draw the waves. हमें एम्पलीट्यूड क्या पता चला उसका? The amplitude is 3. The amplitude will be 3. Now we have to just draw the waves. सबसे पहले हमने उसका ना crest बनाना है. Crest will come here, somewhere around the 0.125 mark. 0.125 वाले mark पे आएगा the crest, which is gonna be on 3. ठीक है ना? 3 पे आएगा crest here. और उसके बाद it will come back to the equilibrium, which is gonna be at the time 0.25. और उसके बाद it will reach a down. ठीक है ना? It will go down, which will be at -3. -3 will be somewhere around here. और उसके बाद ये वापस अपनी undisturbed surface of the water पे पहुंचेगा, that is equal to 0. तो 0 पे वापस पहुंच जाएगा. So as we can see, one wave is being produced. ठीक है ना? पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस 0 पे आया और उसके बाद नीचे आया 8 -3. उसके बाद ऊपर गया at 0.5. तो आपने ये साइकिल कंटिन्यू करते रहना है जब तक 3 वेव्स नहीं बन जाती, 3 कंप्लीट वेवलेंथ्स प्रोड्यूस नहीं हो जाती, मतलब हम ड्रॉ नहीं कर लेते. तो आई डोंट नो व्हाई बट आई कैन नॉट ड्रॉ इट हियर. सो आई एम जस्ट गोना यू नो इसको ही बना ले इस पे बना लेते हैं. तो 3 वेवलेंथ्स इस पे बना लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस इज 0, दिस इज 0. तो यहाँ हम एक लाइन बना लेते हैं. 0 विल बी दिस इज 0, दिस इज -3 एंड दिस इज 3. तो सबसे पहला पॉइंट होगा ऑन हियर. उसके बाद पॉइंट होगा 0.125 पे, विच विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड. उसके बाद होगा नेगेटिव का 0 पॉइंट, आई मीन नेगेटिव का 3, वो होगा हियर एंड बैक टू 0. उसके बाद द साइकिल विल रिपीट. एक सेकेंड, इट विल गो बैक हियर. उसके बाद अगेन one last time the cycle will repeat and it will go back here. As you can see, waves are being produced. So total में 3 बनानी है हमने. One from here to here, second from here to here, and the third one from here to here. So yeah, hopefully you draw that on your own. Acha, B1, the frequency of the wave is increased. Describe how the apparatus shown in figure 8.1 is adjusted that the frequency of the wave is increased. So in order for the frequency to increase, the crest will come closer to each other, right? अगर crest पहले इतने दूर थे, तो बाद में crest के अंदर जो in between की distances होंगे, that will decrease as the frequency is increased. So in order for that to happen, we need to vibrate the wooden bar more, which is producing the waves. जो wooden bar है, that is producing the waves, that is producing the force which is causing there to be waves. So in order for that to happen, we need to move the wooden bar more often. Move bar up and down more often per second, faster, or make rubber band stronger, shorter, tighter, more in number. Use bar of less mass or weight. अच्छा आगे देख लेते हैं. State what happens to the speed and wavelength of the wave as the frequency increases.
सो द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड। तो ये देखते हैं। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी है ना और वेलोसिटी है, they are independent quantities, they will not change if one is changed। अगर वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेलोसिटी विल स्टे द सेम। ठीक है ना? वेलोसिटी विल हैव नो चेंजेस। अच्छा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना दें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप दैट इन माइंड के वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। So velocity is not changing or frequency has increased. Frequency increase हुई है और velocity is not changing. So in order to balance these two sides out, we'll need to decrease the wavelength. So if the frequency is increased और velocity में कोई difference नहीं आता है, तो we need to decrease the wavelength in order to have equal values on the both sides. तो wavelength decrease होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप मैथ में भी ये पढ़ते हो कि बोथ ऑफ द साइड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है ना? फॉर इट टू बी रैशनल। ठीक है ना? तो हाँ, तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुई है और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सो इन टर्न द वेवलेंथ हैज टू चेंज। और वेवलेंथ कैसे चेंज होगी? इट विल डिक्रीज बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। और जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है उतनी छोटी वैल्यू होती है, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है उतनी बड़ी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिनोमिनेटर में, आई मीन न्यूमरेटर में 10 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो दैट विल गिव अस 5। लेकिन अगर हमने डिनोमिनेटर चेंज करके 10 डिवाइडेड बाय, अगर हमने डिनोमिनेटर चेंज किया, डिनोमिनेटर को हमने 0.5 बना दिया, so the value will increase to 20। so that means कि अगर आप डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, that will increase the value of the answer। आगे देख लेते हैं। The apparatus shown in figure 8.1 can be used to demonstrate refraction। State the additional apparatus needed to demonstrate the refraction। तो रिफ्रैक्शन के लिए कोई चीज चाहिए होगी, that would be a block, glass block, plate, shallow, deeper area, boundary। Very simple thing। आगे, interesting question। Draw on figure 8.3 to show the refraction of the water wave। Label a boundary where the refraction occurs। First of all, first and foremost, we have to make a boundary। ये एक मैंने P1 से मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन डायग्राम उठा लिया मैंने, फॉर देयर टू बी अ रेफरेंस, फॉर देयर टू बी अ रेफरेंस पॉइंट। अच्छा जी, वी हैव लेबल, हमने एक बना लिया सिमिलर डायग्राम टू दिस। तो हमने, दिस विल बी द डीप साइड ऑफ द वाटर, डीप, this will be the shallow, and this will be the boundary। so that is the answer। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा फर्दर समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले वेव कर रही थी इस डायरेक्शन में ट्रैवल, फिर उसके बाद द वेव हैज ट्रैवल्ड इन दिस डायरेक्शन, है ना? वेव का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स मेक अ नॉर्मल, नॉर्मल बना लेते हैं। एंड नॉर्मल हमने बनाना है 90 डिग्रीज टू द बाउंड्री। पहले जो वेव थी दैट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? पहले द वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट देन द वेव स्टार्टेड मूविंग इन this direction, so it is coming closer to the normal। that shows a change in mediums। it is coming closer, ये मैंने खुद बनाया है।
like this is not included in that in the diagram, ये मैंने खुद बनाया है in order to represent के पहले वेव इधर आ रही थी and then while changing regions, while going from region P to region Q, from going to deep to shallow water, the the direction will be changed and it will come closer to the normal, right? So that is the answer. आपको ये बनाना जरूरी नहीं है, my bad. आपको ये बनाना जरूरी नहीं है, you just have to represent this. अच्छा, figure 8.4 shows a connection to the internet made from a remote station using a satellite above the Earth's surface. Data is sent between station A and B using microwaves, which travel to and from the satellite. Station B is connected directly to internet using optical fiber. So they have told us connection is made. अच्छा जी. The speed of the microwave is 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second. The station A and B are 560 kilometers from the satellite. So from here to here, it will take 560 kilometers. यहाँ से स्टेशन ए तक, स्टेशन ए से सैटेलाइट पे गई है सिग्नल्स, माइक्रोवेव्स गए हैं, और माइक्रोवेव्स उधर से they have been transmitted, boosted and sent to station B. तो that means के 560 इधर से इधर तक का होगा डिस्टेंस, और 560 ही from the satellite to station B होगा. So that means के the total distance traveled will be 560 plus 560, which will give us 1120 kilometers. But the speed is given to us in meters. तो पहले हम देख लेते हैं स्पीड, तो आपको पता ही होगा कि the speed of light in air is 300,000 kilometers per second. तो हमने ये फिगर आउट करना है व्हाट्स द टाइम इज. टाइम निकालने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं. कैलकुलेटर, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. हमने निकालना है टाइम, तो हम टाइम और स्पीड की जगह उसको वो कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, आई मीन एक्सचेंज कर देंगे. तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम. तो डिस्टेंस क्या हमारे पास, डिस्टेंस इज 1120. हमारे पास स्पीड क्या है, डिवाइडेड बाय 300,000, which will give us a time of 0.0037 seconds. Let's check. So this is the answer, 0.0037 seconds will be the answer. अच्छा, आगे. The same data can be sent from A to B in a shorter time along the surface of the Earth, using infrared waves to carry the information in optical fibers. State one property that infrared waves and microwaves have in common. Although this is unrelated to what we're about to solve, but what they are saying is, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक कोई चीज हमने डेटा ट्रांसमिट करना है, तो वन वे वी कैन डू इट इज हम ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. बट अनदर थिंग वी कैन डू इज वी कैन प्लेस अ सैटेलाइट हियर. हम सैटेलाइट से यहां से हम यहाँ एक स्टेशन रखेंगे दैट विल ट्रांसमिट डेटा. वो सैटेलाइट में जाएगा, बूस्ट होएगा, एंड दैट विल go back to station B. But another way we can do it is using optical fiber, which will be along the Earth's surface. So those are the two ways which has been given us. First of all, this will be more expensive. Second of all, this is a shorter distance. So that is a different story. अगर इसका क्वेश्चन आया आगे तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा.
State one property that infrared waves and microwaves have in common. They are both in electromagnetic spectrum. They both travel at 300,000 meters per kilometers per second and many other qualities. तो ये देख लेते हैं हम लोग. रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, वेरी सिंपल. अगले वाला भी कर लेते हैं. अच्छा, are electromagnetic are transfer all electromagnetic waves are transfers of course carry energy causes heat have larger wavelength smaller frequency than visible light. Acha, these are all for part 2, so hopefully you've written that. आगे देख लेते हैं. Suggest one other advantage of using optical fiber to connect station A and B. अच्छा, मैं इसी की बात कर रहा था. या अगले क्वेश्चन में ही आ गया. So what I said was, first of all, अगर एक स्टेशन यहाँ लगा हुआ है, एक स्टेशन यहाँ लगा हुआ है एंड यू नीड टू ट्रांसमिट डेटा, सो देयर नीड्स टू बी अ सैटेलाइट हियर. तो एक स्टेशन से यहाँ जाएगा डेटा एंड दूसरी डेटा स्टेशन से, आई मीन सैटेलाइट से दूसरे स्टेशन तक डेटा जाएगा. सो मोर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड. लेकिन इफ वी यूज ऑप्टिकल फाइबर्स we can directly transfer the data from station A to station B by a shorter path. In shorter path लगेगा तो the speed, I mean not speed will not matter. The distance will be less, therefore time between transmission will decrease. Okay, second देख लेते हैं. अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताने लगा था that satellites are awfully expensive to build and deploy. Satellites बहुत मुश्किल होते हैं and they're comparatively very expensive. So it would be cheaper to just place optic fiber. Acha, less interruption, satellites expensive, more channels, better bandwidth, more data. So if data is being transmitted more frequently, more quickly, then of course more data can be transferred. Less likely to be hacked. हाँ, ये भी एक है. ये आप कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ सकते हैं, राइट? ये कंप्यूटर साइंस में भी है. So yeah. So that is it for the video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.